Assalamu alaikum, this is Sir Arshad and I have a new topic today. आज मेरे पास एक नया टॉपिक है and it is gonna be a very interesting, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है. And the last topic was you know very well future continuous affirmative, क्योंकि आखिरी दफ़ा मैंने आपको future continuous और उस affirmative में उसका इस्तेमाल सिखाया था, how to make the sentences, के sentences को हम किस तरीके से बना सकते हैं. So right now I'm gonna let you know negative sentences in future continuous. The future continuous negative, and the formula is subject plus will not be and plus first form of the verb and ing plus object full stop, and it is a formula of negative. It is a formula of negative. ये negative का formula है. So we have started the today future continuous negative sentences. तो आज future continuous का हमारा negative sentences चल रहा है. So listen to me. Most of the people in case of making the negative sentences, they're putting not after the be. लेकिन आपको पुट करना है, यू मस्ट पुट नॉट आफ्टर विल. आपने विल के बाद नॉट लगाना है, देन यू यूज़ बी, फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे बी को. तो किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा इसको इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एंड आई एम गोना लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ. देखिए एग्जाम्पल्स. Number 1, and for example, I will not be. I will not be teaching you. मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा. And number 2, we will not be getting up in the morning. मतलब we will not be getting up in the morning, हम सुबह में नहीं उठ रहे होंगे. And number 3, you will not be coming to my house. You will not be coming to my house, तुम मेरे घर में नहीं आ रहे होंगे. And number 4, they will not be making, they will not be making picnic, वो पिकनिक नहीं मना रहे होंगे. And she will not be waiting. She will not be waiting for them. Okay? वो उनका इंतज़ार नहीं कर रही होगी. And number 6, he will not be making joke, J-O-K-E, joke, or you may say that making fun. He will not be making jokes, वो मजाक नहीं कर रहा होगा. So guys, today we have started the topic future continuous, and its structure,
the which is subject will not be first form of the verb ing plus object. It's a negative sentence. And right now I gave you a few examples. Number one, I will not be teaching you, and we will not be getting up in the morning. You will not be coming to my house, and they will not be making picnic, and she will not be waiting for them, and he will not be making jokes. इट मीन्स आखिरी वाला कि वो जॉक यानी मजाक नहीं कर रहा होगा. ऑलरेडी आई ट्रांसलेटेड द एग्जाम्पल्स. ओके, मैंने ट्रांसलेटेड भी कर दी, इस एग्जाम्पल्स की ट्रांसलेट कर दिया. So I hope that actually and you realized this topic is very interesting and as well as very easy, and I hope that inshallah taala पहले की तरह आप इसको समझ गए होंगे. And I'm going to come to you with my next topic and with my next video, and I would like to say Allah Hafiz.